2023 for CA final. Okay, let's go live on the YouTube as well. We are going live on YouTube as well within a fraction of second. Just wanted to confirm for the people those who are connected here, right? And also for the people those who are connected on YouTube live. Is my audio video clear? If it is clear, just write clear in the chat box. Hi, hello everyone. Fatafat लिख दीजिए. Right, it's a very important discussion where we are going to be discussing end to end about ICAI campus placements for November 23 students. Right? Fatafat. Yes or no? Hello, hi. If you can hear me out, just write hi fi. Yes in the chat box, please, so that I can just see you. Right? I can hear you out. I can hear your voice from the chat box. Hi fi. Okay, hi fi मुस्कान जी. यूट्यूब की जनता बता दो फटाफट. मयंक जी कह रहे हैं क्लियर. और बताइए यूट्यूब से सिमरन जी, हेलो. यस, जो जूम पे कनेक्टेड है, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड टर्न ऑन द वीडियोस. आई कैन सी दिव्यांशु इज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर दिस सेशन. हाय बडी. यस, स्वेटर वेटर पहन के बैठा है बेचारा, ठंड लग रही है उसको. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, हर्ष बिंदल जी वेलकम फॉर दिस सेशन. केतन जी वेलकम फॉर दिस सेशन. ऋतुजा जी वेलकम फॉर दिस सेशन. चलो ग्रेट. Okay, very happy to have all of you for this session out. Before we start this session, just also wanted to know, are you connecting for the first time, second time, or you have seen me multiple times? या रोज ही देखते हो मुझे? Just in the chat box wanted to know. भूमिका बोल रही हो सर, मैं तो आपको रोज ही देखती हूँ. Right, चलो रोज ही देखते हैं. First time, second time, multiple times. Right, first time. Okay, a lot of people have been joining for the first time. A lot of people have been joining for the second time. Okay. I would also request you to guys, for those the people those who are joining for the first time, request you to please check the YouTube channel where I have given and taken a lot of important sessions for you guys. If you have missed out the same, request you to please check it. Right, मेरे YouTube पे जाइए, लाइव सेक्शन पे जाइए, बहुत सारे लाइव सेशंस आप ही के लिए ले रहे हैं. Okay, perfectly fine. Now, why this session is important and why I wanted to have this session for you guys. Now, since most of you are gonna be, or every one of you are going to be watching this session, that's itself showcase that you are a qualified CA, right? Because CAs को एक चीज सबसे अच्छे से समझ में आती है, and that is called as ROI, है ना? SFM में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. What is the investment you're doing? You're doing an investment for your time today, and you will only do this investment when you know the return is going to be there. तो दिल में अगर मान लिया कि मैं क्वालिफाइड सी हो, मतलब आप सही जगह बैठे हो. राइट, अगर आप कहीं दोस्त सेशन नहीं देख रहे हैं, मतलब क्या? राइट, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है. Right, now heads off to all of you guys those are sitting here, because I'm going to be discussing end-to-end process of ICI campus. I'm going to be discussing and helping you out with the things which are going to be happening in a campus. I'll also going to be guiding you what is the process of campus which is going to be there for the second students. And with this also, I would request all of you to please carry a pen and paper. Right, pen paper notebook carry kar lijiye, so that we can guide you, we can teach you out the important concepts which are supposed to be kept in mind when you're going to be sitting for an ICI campus. Okay, perfectly fine. Now, before moving to this, right, I don't know, did you guys have heard any of the feedback about the ICI campus? या ICI campus के बारे में कुछ सुना है, देखा है, समझा है? Anything in the chat box? Just wanted to know, right? What is the knowledge or expectations you have about ICI campus? या कुछ सुना है, देखा है? Anything, nothing. Okay, perfectly fine. चलो, it's better to write on a clean slate. Nothing. चलो, perfectly fine. So what I'm going to be doing, let me share my screen, right? I'm going to be opening up the brochure of previous campus placement, so that you'll get a better and decent understanding about the ICAI campus. Okay. Just wait for a fraction of a second. Let me also load the ICAI campus details out. Now, one thing about ICAI campus based on a trend, right? Although everyone is aware of the CA final or CA exam results date, right? धीरज भैया ने already अपने X handle में डाल दिया है, ठीक है? So everyone is aware of it's going to be somewhere around 5th to 10th, right? We'll be expecting the result of CA final. Now, one more thing which people don't talk about, which I'm going to be talking about here in this session, and that is after the results are out, whenever it's a history, I'm just showing the past trend to you guys so that you can know it. Once the results are out, within next 30 days, the campus starts. I repeat, दो चीजें बता रहा हूँ, ट्रेंड बता रहा हूँ. जिस दिन रिजल्ट आएगा,
उसके 30 दिन में campus will start. That means you guys are going to be giving an interviews. First thing. Second thing, the campus registration mostly starts after 7 days of the results. Now imagine that you guys are going to be qualified CA on 5th of January. Just assuming. तो चेहरे पे स्माइल डालो, तब CA बन गए हो, right? Your campus registration mostly is going to be starting somewhere around 12th of January. Now, what is important? Important part here is you should not miss out the timelines, right? If you miss out the timelines for the registration of a campus, it's gone. They're not going to be listening कि भाई तुमने भूल गए or anything which has gone wrong. What is important to keep an eye on timeline, and that is why I'm saying, guys, right? If you have not joined our camonk community group, if you have not subscribed our channel, please do it. The reason is all the important timelines, how to fill out the ICAI campus form. We are going to be covering it in a very detailed manner. ठीक है? तो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो. जो जूम पे भी बैठे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो. Now let us come to the ICAI campus brochure, which was launched for the previous campus. The previous campus was the 58th campus placement, which was there. So this is going to be the 59th campus placement, which is going to be there for November 23. Right? Although the brochure is yet to be out, but the process is every year same. Nothing is going to be changing. So hence I'm going to be discussing the same process which is there so that you are aware of it. Right? And also I would request for the people who are connected here, please do share this video with your friends so that they are at least aware before the results are out. Now, first and foremost thing which is there, and that is interview process and the schedule. Since ICAI campus divides the interview process into two parts, that is big center and the small center. I repeat, since ICAI campus divides the campus process into two parts, big center and a small center. Out of this, you guys need to choose one big center and one small center. Which all are the big centers which are available? Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, Hyderabad, Jaipur, Pune. If I take the total, it counts to 9. The 9 big centers are there, and there are a lot of small centers which are there. Okay. Now, let me just draw a line parallelly, which is again going to be helping you out to understand the things in a better way. If you want to draw it, bang on. If you don't want to draw it, no problem. Okay. So let me just assume. Okay. Let me just assume that your result is going to be, this is an assumption based, but yes, okay. And a plus minus 5-6 days, 5th of January, I'm assuming that your result is going to be out. After that is done, right, mostly ICAI is going to be launching their registration for campus placements, right? I'm assuming that it is mostly going to be within 7 days, and that is, say, for example, 12th of January. It's 2024. Okay. What does the registration means? It's assumption-based timelines, right? So don't take it very seriously, although we'll wait for the final brochure to be out, but at least we should know कि क्या-क्या होने वाला है. Now, after the registration starts, right, it's very important to fill the ICAI campus form. But the question is how to fill it, right? How to fill it. Don't worry, that time I'll have a very separate and detailed video session for 1 hour, which is there, which will guide you in very detailed manner how to fill it. Now, but whenever you're going to be filling it, there you'll get a choice of two things, which is big center and a small center, right? There are 9 big centers which are there, and there are few small centers, right? Let me take some random numbers, but approximately 20 plus small centers are there. So you need to choose one big center and you need to choose one small center which you're going to be setting for the campus. Okay? Ye process clear hai? Now, after this is done, once you select the centers out, to say, for example, Shivam Palan have selected its big center as Mumbai and a small center as Thane, just assuming it. Okay. After that is done, there is going to be a first round of a screening or a selection where companies will select and view my profile, and based on that, they will shortlist me. Okay. They will shortlist me. Now, this is generally going to be done within 20 to 25 days. So let me just assume that again, say, for example, that is happening on 25th of January. I got my first shortlisting. Now, understand point to be noted here. ये चीज दिमाग में डालो which people don't know. If you are aware of this, you will be able to work hard.
In ICAI campus, companies shortlist you. You don't shortlist the companies. I repeat, in ICAI campus, companies shortlist you. You don't shortlist the companies. Now, let me go to the companies which are there. Since I've been working into this industry for almost 4 years, I have the entire list of companies which comes. I have the entire list of companies, what is the CTC offered, what is the vacancies which are there. Now let me take and assume that these are the list of companies which are there, which came to the ICA campus for the last to last attempt, which is there. And last time also this few companies came in. Now there are few companies which came to the ICA campus. Say for example, let me assume that a company called as Dell International Services came to the ICA campus. Okay. Now, someone here sitting that says that, okay, I want to get into Dell. ICI campus, please shortlist me Dell company. Is this going to be happening? No. Companies, देखो, please understand, you don't shortlist the company will shortlist you. So what is going to be happening? ध्यान से देखे, after you fill out the form, this form is going to be shared. This form is going to be shared with all the companies. And companies then see your profile, company then see your resume, right? Company then see your articleship details, company will see your work ex, company will see your some extracurricular activities which are there. Company will also see your one important parameter which is attempt. Don't take it otherwise. I want to tell you the facts, right? And basis of all these parameters, the shortlisting is going to be done. Okay. Now after this is done, I'll get to see the shortlisting in my portal. Sir, but I want to get into Dell. Will Dell shortlist me? Don't know. That is the only one negative thing about the campus. Okay? Because the companies shortlist you, you don't shortlist the companies. I hope this is clear to you. मेरी तरफ गुस्से से ना देखे, मैं आईसीआई कैंपस नहीं चलाता हूँ, ठीक है, मैं सीएमओ चलाता हूँ, ठीक है. Yes. Now after this is done, once the shortlisting is done, say for example, ध्यान से समझेंगे. Say for example, a company called SKPMG have shortlisted me. Say for example, company called as PwC have shortlisted me. Say for example, ICICI Bank have shortlisted me. Say for example, ITC Hotel have shortlisted me. Say for example, Airtel has shortlisted me. Say for example, EY have shortlisted me. Okay, कितने shortlisting आई? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 companies have shortlisted me, guys. Okay. What is this? This is called as the first round of shortlisting. ये होता है first round of shortlisting. Now, understand one thing. Since ICAI campus says that if companies have shortlisted you, you can give a consent to total 4 companies. Hi. Say for example, 6 companies have shortlisted me. मेरा मन है कि मैं 6 के इंटरव्यू दो. ICAI बोलता है, right? What ICAI campus says is, अच्छा एक सेकंड को, my internet went off. हाँ, ICAI campus says that you are eligible to give the 4 companies. You need to select the 4 companies out of this for which you will be giving an interview. How do you select it? I'll guide you. Yes. How do you select it? I'll guide you. Don't worry. Yes. Now, this is the first round. Now, do you think everyone will get a company on the first round of shortlisting? I'll repeat. है ना? Do you think that every one of you will get a lag हो रहा है? Okay, so sorry. Yes. It is going to be sorted in a fraction of a second. My mistake. Still lagging. Okay, no problem. My right. हे इंटरनेट वाले भगवान, प्लीज मेरा इंटरनेट, यार आईपैड चला जाएगा. अब आ रही है दोस्त आवाज? हे इंटरनेट वाले भगवान, प्लीज मेरा इंटरनेट ठीक करे. हे इंटरनेट वाले भगवान, मेरा इंटरनेट ठीक करे. ओके, परफेक्ट. जनरली माय इंटरनेट गोज ऑफ, राइट? Okay, perfect. Chalo, it's okay, right? Now it's fine. If it goes, just keep me posted. Right. I repeat. The question was, do you think everyone will get shortlisted in the first round? Do you think everyone will be get shortlisted in the first round? क्या सबको shortlisting आएगी? Yes or no in the chat box, please. Yes or no in the chat box, please.
I want every one of you to participate. For the people those are connected or Zoom, people are connected or YouTube. क्या सभी को शॉर्टलिस्टिंग आएगी? क्या सभी को शॉर्टलिस्टिंग आएगी? द आंसर इज बिग नो. द आंसर इज बिग नो. अब ध्यान से समझते हैं. Now, since everyone will not get a shortlisting, and hence ICAI says that there is again going to be a second round of a shortlisting, because reason समझो. The reason is if the PWC is not selected by Shivam Palan, PWC की तो vacancy खाली रह जाएगी. So PWC will move and shift to some another candidate, right? EY will move and shift to another candidate, right? And that is why you will have a second round of shortlisting as well. Now, ध्यान से समझेंगे. How many companies you can give a consent together? You can give a consent together, including first and second round, to 4 companies. You can give a consent to 4 companies, including the first round and the second round for a big center, as well as for a small center. मतलब मैं 4 कंपनीज को हाँ बोल सकता हूं. आप समझिए. सर, इन फर्स्ट राउंड आई गॉट PWC, राइट? ध्यान से सुने. इन फर्स्ट राउंड आई गॉट अ PWC and I gave a consent to 4 companies. How many consent I can give in the second round? 0. If you give a 4 companies consent on a first round, you'll be eligible to give a 0 consent. Imagine that you only gave a consent to, right? Just a second. Airtel and EY. You only gave a consent to 3 companies. How many companies are eligible to give a consent more in the second round? That is 1, right? If you have given 2, it's 2. If you have given 1, it's 3. We have given 0, that you'll be eligible for a 4. Total 4 होना चाहिए. I repeat, total 4 कंपनीज को आप कंसेंट दे सकते हो. ज्यादा क्लियर है? यस. यस. मैं अभी टाइमलाइंस और डेट्स के साथ बताऊंगा सब कुछ. ओके. नाउ someone is saying कि sir, if I rejected PWC in the first round, will I get PWC in the second round? No. एक बार किसी को मना कर दिया तो दोबारा नहीं आती. दोबारा नहीं आती. Right? In a similar way, if you have rejected someone, it is not going to be coming in the second round. Sir, but the question is, how would I know which company will shortlist me on a second round? That is called as contingent event. That is called as a contingent event. Yes. Now, one thing which I'm trying to tell you out, guys, campus may only one problem is that companies shortlist you, you don't shortlist the companies. The event is very much uncertain. So what is important is try approaching as much as companies, either off campus as well, and also try to ensure that you're very proactive when the campus placement starts. Okay? Chalo. Let me summarize the things for the people who are there. So also I am going to be using the brochure parallelly so that you can understand it. ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे कैसे डिफाइन होता है. मैं पास्ट टाइमलाइंस के थ्रू समझाना चाहता हूँ so that you guys can understand. ठीक है? देखो, पास्ट टाइमलाइन क्या बोलता है? लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन शॉर्टलिस्टिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ये मेरे काम का नहीं है. ऑनलाइन कंसेंट गिवन बाय द कैंडिडेट. जो मैं बता रहा था, फर्स्ट राउंड कंसेंट देना पड़ता है कैंडिडेट को, राइट? फर्स्ट राउंड कंसेंट देना पड़ता है. सेकेंड राउंड ऑफ अ कंसेंट जो कैंडिडेट को देना पड़ता है वो ये है. ठीक है? तो 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड. दोनों राउंड का मिला के मैं कितनी कंपनीज को कंसेंट दे सकता हूँ? 4. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ द क्वेश्चन इज, let me see and understand what does ICAI says in terms of vacancies. Let me see and understand what are the number of vacancies and the jobs offered. This is the list which is issued by ICAI. मेरी लिस्ट नहीं है. ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Top 10 organization in terms of job offered in campus placement program. ऐसी कौन से 10 ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां देती है? ओके, लेट्स सी एंड रीड इट आउट. व्हाट इज PW? वाला PW नहीं बेटा जो आप सोच रहे हो. इट्स PWC. ठीक है? It's PWC. Again, it's divided into 2. PWC India and PWC SDC. And the guys, those who don't know what is PWC SDC, every Big Four have divided their arm into global and Indian part. PWC SDC is the global leg, right? सबसे ज्यादा हायरिंग आपको दिखेगी PWC की. ठीक है? सिमिलरली जैसे EY है, तो EY का एक EY इंडिया है, EY GDS है.
डेलॉइट है तो डेलॉइट का यूएसआई है एंड डेलॉइट इंडिया है। केपीएमजी का केजीएस है, केपीएमजी ग्लोबल सर्विसेज, और केपीएमजी इंडिया है। जैसे कि बीडीओ का बीडीओ राइस है, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ, राइट, और बीडीओ इंडिया है। जैसे ग्रैंड थॉर्नटन भारत, राइट, एंड ग्रैंड थॉर्नटन इंडस, इस तरीके से डिवाइडेड है, राइट। एवरी कंपनी nowadays have their global leg present in India because lot of outsourcing work is taken from there. Now let us understand कौन सी कंपनीज कितने ऑफर्स दे रही है, ये आईसीआई बोलता है। ये हो गई पीडब्ल्यूसी, एसआरबीसी, डेलॉइट और बीएसआर। इफ यू डोंट नो व्हाट इज बीएसआर, बीएसआर इज केपीएमजी, राइट। एसआरबी इज ईवाई, एसआर बाटली बॉय, ठीक है, एसआर बाटली बॉय, और एसआरबीसी वो ईवाई है, ठीक है। तो एक कैटेगरी हो गई बिग फोर की जो सबसे ज्यादा हायरिंग करेगी, क्लियर। सेकेंड कैटेगरी जो हायरिंग करेगी दैट इज बैंकिंग कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। आजकल काफी सारे नए बैंक्स भी आपको दिखेंगे, जैसे एचएसबीसी, एचडीएफसी बैंक, राइट। सम एनबीएफसी यू विल आल्सो फाइंड इट आउट इन द कैंपस, काफी एक्टिव है नाउअडेज, दैट इज देयर। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी आती है आपकी ग्लोबल एंड आईटी कंपनीज, जैसे इन्फोसिस, एक्सेंचर, टीसीएस एंड जेनपैक्ट। मेरे तरफ ना देखे, स्मार्टर पीपल गॉट एन आइडिया कि आईसीआई कैंपस में जो कंपनीज मेजर हायरिंग करेगी वो है बैंकिंग, सेकंड इज बिग फोर्स, एंड द थर्ड इज ऑफ कोर्स योर आईटी कंपनीज, ठीक है। अब ध्यान से देखें फिर से, बैंकिंग कंपनीज मोस्टली ऑफर टू मेजर रोल, दैट इज क्रेडिट मैनेजर एंड रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर। बिग फोर्स विल मोस्टली ऑफर यू, अच्छा सो सॉरी फिर से लैग हो गया, अयो जी क्यों होता। ओके लेट मी जस्ट स्विच द इंटरनेट फॉर अ व्हाइल, सो सॉरी, लेट मी जस्ट स्विच माय इंटरनेट गाइस, क्लियर है। guys just give me a fraction of a second guys, meanwhile if any one of you have any queries, right, you can put it in the chat box, I'll be happy to answer it। ऑफ कैंपस में कैसा होता है, क्या होता है, सभी डिस्कस करेंगे। योर क्वेरीज आर सपोज टू बी एड्रेस्ड, इफ यू आर हियर आई विल एंश्योर दैट योर क्वेरी इज सॉल्व्ड। यूट्यूब की जनता, आप आए हो तो लाइक कर दें, आप आए हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके। चलो ग्रेट, लेट्स वेट फॉर अ स्क्रीन टू लोड। Meanwhile, for the people, those of you, if you have any queries, put it in the chat box. We'll be happy to address it. कोई कह रहा है रिलायंस का नाम तो लीजिए सर, अंबानी जी नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल सागर जी डिस्कस करेंगे, अंबानी जी को भी खुश करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट अंबानी जी एज वेल, ओके परफेक्टली फाइन। नाउ बिग फोर्स मोस्टली कौन से रोल्स के लिए हायर करती है, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका ट्रांसफर प्राइसिंग भी आ जाएगा, विच इज देयर, ठीक है। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि नीश डोमेन के लिए कैंपस में आएगी, द आंसर इज नो। नीश डोमेन विल नॉट बी सीन वेरी इजीली इन कैंपस। व्हाट आर द नीश डोमेन? एफडीडी, forensics, right? Investment banking, M&A, M&A taxation. These are the niche domain where you'll not find the big four coming in the campus. Generally, these vacancies are filled via one thing, which is reference. Life में सबसे ऊपर है reference. Okay? You guys should focus on gathering one thing, that is reference. If I talk about IT companies mostly are going to be coming and hiring for first finance role. ठीक है, फाइनेंस रोल के लिए हायर करेगी। सेकंड दे हायर फॉर एसएपी अकाउंटिंग रोल प्लस ओरेकल स्लैश डायनामिक 365, that is there. And third, which is there, which is called as R2R profile. And fourth as well, I could count it as FP and A. If you guys are not aware of these terms, request you to please check my domain-wise guidance session.
right? Request you to please check my domain wise guidance session, which is uploaded on YouTube, right? So this are the bifurcation which is there. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? आईसीआई बोल रहा है। मैं सिर्फ कैटेगरी बता रहा हूँ कि कौन से रोल के लिए हायरिंग होता है। After this is done, let me also go to some good work which I've done in my life. Let me show some good work which I've done in my life that is related to this. Okay. Now, if you could see, right, if you could see, it's the same thing which IC have stated. I have prepared this list because since I am into this industry, तो मेरे पास पूरी लिस्ट होती है कौन सी कंपनीज कितने वैकेंसी के साथ आ रही है, राइट? तो ICICI बैंक लास्ट टाइम आई थी with 1250, this is last to last time, and with a CTC of 11 lakh, एवरेज CTC इतना था। Similarly, if you could see, देखो ये बैंकिंग का, अच्छा एक सेकंड को highlight and use the same color, है ना, so that you can understand it in a better way. बैंक, 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 ठीक है। Then Big Four के लिए I'll use different color. Big Four, 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 Big Four. Okay, Big Four, Big Four. Okay, that is there. And the third category which you'll find it, अच्छा ये तो बैंक ही है, is Genpact, Oracle, Accenture, Infosys, Adani, Reliance. ठीक है, that is there. अगर आप देखें, right, if you see ध्यान से देखें, if you guys are smarter enough and if you could just see, if you could see number of vacancies जो अगर ये कंपनी लेके आती है, if I take the total, this approximately will come to 12,000, ठीक है। और if I take the total of this much only, it will come somewhere around 8,000 or 9,000, राइट? मतलब क्या, सबसे ज्यादा हायरिंग यही कंपनीज करने वाली है। अब ध्यान से सुने, सिंस दिस कंपनी इज गोना बी हायरिंग द मोस्ट, द सिलेक्शन is gonna be done by most of the candidate will be done by this companies only. Agree? Basic mathematics, है ना? अगर वैकेंसीज ही इन्हीं कंपनी के पास है तो हायरिंग भी यही कंपनी करेगी, और हायरिंग करेगी मतलब कि इन्हीं रोल में हायरिंग करेगी। एग्री? राइट? नाउ for the people those who are here, those who always wanted to go into some unexceptional domain, और जो चाहते हैं कि कुछ में नए डोमेन्स में जाओ, need to focus on two important things. ध्यान से सुने। First, you should start collecting and building your brand, and start collecting one important thing, and that is references. With this, you guys should also focus on one important thing, and that is off campus. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा फैक्ट्स फिगर जो आपको दिखा रहा हूँ वो बता रहा है। Second thing which is there, and that is, which is again very important, your interview preparation will decide that you're gonna be getting a good offer or not. How and why? ध्यान से देखते हैं डेटा। ये मेरा डेटा नहीं है, आईसीआई का डेटा है। ध्यान से देखते हैं, लेट्स सी द डेटा गाइस। इफ यू हैव अ कैलकुलेटर, बैंग ऑन इफ यू कुड कैरी इट, ठीक है। नाउ इट सेज 57th कैंपस, मतलब मई जो 2023 में हुआ था, द करंट प्रीवियस टू प्रीवियस कैंपस, 189 companies participated into campus. Number of students registered for the campus, 10,000. Number of job offer which were rolled out is 5,800. Number of job accepted by the candidate was 4,200. What is the probability that you will get a job offer from a campus? 42%. This is number called as accepted the offer. If I take the further number, which is called as number of candidates joined the company, this number will again boil down to somewhere around 3,000. Agree? ऑफर लेना अलग होता है, ज्वाइन करना अलग होता है, राइट? So your probability of getting into good company is 1/3. I'm not making you scared. I'm making you aware. Please understand this. I'm not making you scared. I'm making you aware. Why this awareness is important? This is very important for you guys to at least know this data and facts so that you learn and start preparing from now onwards. Because what is going to be happening, the time results are going to be out within next 7 to 8 days. You will start running a race कि अच्छा अब तो कैंपस का प्रिपरेशन करना है, बट
till the time if you have not prepared your basic stuff, you'll start regretting things. Okay, let's come and calculate the percentage of this. Number of students accepted, number of student offered. I think it's 35%, right? This by this, 50%. This by this, I think again it comes to somewhere around 45%. If I'm not wrong, matlab, the percentage can vary, right? So that is something which is important. ठीक है, ये आईसीआई का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, मेरे तरफ ना देखिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस एंड जर्नी फिर से। ओके, now after you got a first shortlisting, there is some again a second shortlisting which is going to be there. Second shortlisting, where the combination of first and second shortlisting, where you need to shortlist 4 companies, जिसको मिला के आपको 4 companies को shortlist and consent देना है। ठीक है, it's gonna be a combination of any combination. It can be 0 1, it can be 0 4, it can be 1 3, it can be 2 2, it can be 3 1, or it can be 4 0. ठीक है, once you rejected any of the company, you'll not be able to see it on the second shortlisting. अगर आपने कोई कंपनी को रिजेक्ट कर दिया तो सेकंड शॉर्टलिस्टिंग में आपको नहीं दिखेगी। क्लियर? यस। आफ्टर दिस इज डन, योर प्रोसेस फॉर इंटरव्यू विल स्टार्ट। आपका एक जर्नी प्रोसेस इंटरव्यू का स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर अगर फिर से हम ये लिस्ट देखते हैं, व्हिच इज देयर, व्हिच सेज दैट योर रिटन टेस्ट विल स्टार्ट आफ्टर दिस। A lot of companies like Wipro, L&T, Reliance, sometimes Genpact will start taking your written tests. Yes, this company will start taking your written test. है ना? Okay, now let us also hear some good news. है ना? ICAI ने कुछ बहुत अच्छे काम भी किए हैं आपके लिए, और वो ये है, they have fixed a minimum PTC of 9 लाख। कंपनीज को बोला है कि अगर कैंपस में आना है तो कम से कम 9 लाख देना पड़ेगा हमारे बच्चों को, नहीं तो फिर नहीं आना है। ठीक है, तो मिनिमम सीटीसी विच इज फिक्स्ड बाय द कंपनीज इज 9 लाख। ओके, तो कंपनीज मिनिमम सीटीसी कितना देगा आपको? 9 लाख रुपए। अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर वी टेक एंड स्टार्ट टेकिंग द डाउट्स व्हिच आर देयर, है ना? ओके, आईसीआई के इंटरव्यूज फॉर द सेंटर्स गोज ऑन डेट वाइज, राइट? ये डेट वाइज इंटरव्यूज चलते हैं। ओके, नाउ साउंड बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। ठीक है, मुझे एक बार चेक कर लो तो यूट्यूब लाइव पे साउंड लैग हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा लैग हो रहा है क्या? हाँ। अब देखो एक और चीज, इंटरव्यूज की जब भी शेड्यूल आते हैं ना कैंपस का, ये पुराने कैंपस का है, तो हमेशा ये चीज होती है कि इंटरव्यू सभी सेंटर्स में एक साथ स्टार्ट नहीं होते हैं, राइट? आईसीआई भी बहुत स्मार्टली इसको प्लान करता है। द रीजन इज, ध्यान से देखें, अगर एक कंपनी है कॉल्ड एज आईटीसी, अगर आईटीसी को डे 1 पे आना है आईसीआई कैंपस में आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो आईटीसी को कुछ लक्ष्मी जी देनी पड़ेगी आईसीआई को, और जिसकी कीमत है 6 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर आईसीआई को आईटीसी को बुलाना है, या आईटीसी अगर कैंपस में आती है, तो आईटीसी 6 लाख रुपए देगी मुंबई सेंटर के लिए। और वो कौन से दिन के लिए? डे प्रीमियर के लिए। पहले दिन को कहते हैं डे प्रीमियर। ठीक है, अब आईसीआई को पैसे कैसे बुला सकते हैं? देखो स्मार्टली हाउ यू कैन मेक मनी। अगर सभी कंपनीज को एक दिन पे बुलाऊंगा तो आईसीआई कंपनीज बोलेगी नहीं यार, मैं एक जगह सब जगह कैसे हो सकती हूँ। तो कंपनीज की इसलिए स्टार्ट डेट सबका अलग अलग होता है, हर एक सेंटर का, ताकि अगर आईटीसी को अलग अलग सेंटर्स में जाना है तो वो जा सकता है, और दूसरा आईसीआई कैन ऑल्सो मिंट सम गुड मनी। तो दैट इज देयर। अगर डे प्रीमियर में आना है तो आईसीआई कंडीशन डाला है कि आप हमें 6 लाख रुपए दे एक सेंटर का, आपको नहीं देना है कंपनीज को। और ये भी कहता है कि अगर आपको डे प्रीमियर पे आना है तो कम से कम आपको 20 लाख देना पड़ेगा हमारे बच्चों को। ठीक है, तो दैट इज देयर। और इसके साथ साथ आईसीआई ऑल्सो सेज दैट इफ यू वांट टू कम टू डे प्रीमियर, ठीक है, सर 20 लाख नहीं देना है तो कम से कम 17 लाख दो, बट 15 कैंडिडेट को तो देना ही है। Are you getting it? So this is the strategy game which is played so that
both the parties are खुश, student are happy, ICAI is also happy, and company might be happy or might not be happy, I don't know. ठीक है. ICAI कैसे खुश हुआ? अलग अलग दिन बहुत सारा पैसा छाप लिया. आप कैसे खुश हुए? मिनिमम सीटीसी बढ़ा दिया. राइट. तो इंटरव्यूज में क्या होता है? इंटरव्यूज में ये होता है कि काफी सारे डेट्स के इंटरव्यूज होते हैं. ठीक है. अब ध्यान से सुनते हैं दो तीन चीजें और. आईसीआई कैंपस में ये होता है कि अगर कंपनी के पास वन वैकेंसी है, से फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक के पास एक वैकेंसी है, उस वैकेंसी के लिए आईसीआईसीआई बैंक 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर सकता है, 10 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले सकता है. राइट. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बीइंग सिलेक्टेड? अगेन 1/10. ये प्रोबेबिलिटी है. कहाँ लिखा है सर? मैं एक बार दिखा देता हूँ. राइट. ताकि आपको पता रहे. आपको सब चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे होता है, क्या होता है. राइट. सो दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. कहीं तो लिखा है ब्रोशर में, मैं दिखा दूंगा. दिख जाएगा तो बढ़िया है, नहीं दिखेगा तो मान लो बस. ठीक है. तो ठीक है, अच्छा भाई. 10 टाइम्स नंबर लिखा होगा 10. ठीक है. कहीं तो लिखा है यार, आई जस्ट फॉरगॉट टू हाईलाइट इट, बट इट्स रिटन समवेयर. ठीक है. तो दैट इज देयर. है ना. ये सिलेक्शन पैरामीटर भी दिया हुआ है यहाँ पे. है ना. इंटरनल सिलेक्शन क्राइटेरिया वो भी दिया हुआ है, जो मैंने कवर कर लिया है अच्छे से. कौन कौन सी कंपनीज पास्ट में आई है? दिस इज अ लिस्ट गिवन बाय आईसीआई. इट इज देयर. कौन सी कंपनीज ने हाईएस्ट पैकेज दिया है अभी तक के? दिस आर द लिस्ट ऑफ कंपनीज व्हिच आर देयर. है ना. उसका भी लिस्ट दिया है. अब कोई बच्चा देख के खुश हो जाता है कि डी शॉ 31 लाख का पैकेज देती है. डेटा पे बात करते हैं. डी शॉ 31 लाख का पैकेज देती है, कोई बात नहीं, मेरे पास है ना, मैं बताता हूँ. डी शॉ 31 लाख का पैकेज देती है, बट कितने कैंडिडेट उठा के गई थी? सिर्फ 9. ठीक है. तो दैट इज देयर. इफ दे वांट टू सिलेक्ट 9 कैंडिडेट्स, कितने लोगों का इंटरव्यू लेंगे? इंटू 10, 90 लोग का इंटरव्यू होगा. दैट इज देयर. So everything boils down to one important thing, guys, and that is your interview preparation also. Right? I am just trying to ensure that you guys do not miss out the important things in your career now. Because the time campus starts, lot of herd mentality and race is going to be starting. आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ दौड़ना है फिर. Right? Because that time one thing will also start, and that is off campus. ठीक है. Off campus drive start हो जाएगी. Now understand one important thing in your life, guys. मेरे mentor ने ये चीज मुझे सिखाई है. And if he says that, Shivam, if you miss the opportunity once, it will not come to you second time. It will go to someone else. Simple example. आईटीसी में एक वैकेंसी है. ठीक है. आपने अप्लाई किया, बाकी लोगों ने भी अप्लाई किया. मान लो मैंने अप्लाई नहीं किया, शिवम पलन को पता ही नहीं था, ही डिड नॉट अप्लाई. डू यू थिंक आईटीसी विल वेट कि शिवम पलन ने अप्लाई नहीं किया तो उसको हम लोग रुक जाते हैं? विल आईटीसी डू दैट? विल आईटीसी डू दैट? नहीं. अच्छा, आईटीसी ये बोलेगा, अच्छा शिवम को तो पता ही नहीं था, पूरे स्टूडेंट्स ने भरा ही नहीं, तो रुक जाते हैं. विल इट डू इट? नो. वंस अपॉर्चुनिटी इज गॉन, इट्स गॉन फॉर एवर. इट विल गो टू समवन एल्स. सेकेंड, अपॉर्चुनिटी विल कम अगेन, बट इट विल कम विद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ समथिंग. यस. मान लो आईटीसी, मान लो क्या 23 लाख का पैकेज देता है. ठीक है. दूसरी बार आपने अवेयर थे, आपने बहुत ढूंढा, चलो विप्रो आया. विप्रो देता है 12 या 13 लाख का पैकेज. ठीक है. स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 लाख का लॉस हो गया. Right. What is important, guys? You should be very, very proactive when it comes to any of the vacancies which are there. I can ask you one simple question. How many of you are aware that the EY has started pre-result drive? Yes or no in the chat box? Yes or no in the chat box? If you know it, good. If you don't know it, whose mistake is this? It's my mistake, right? ये तो शिवम सर की गलती है. उन्होंने तो चिल्ला चिल्ला के बताना चाहिए. है ना. If you know it, very good. If you don't know it, it's again your mistake. Yes, KPMG have also started. I know it. है ना. Please, 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 guys. Now, what is pre-result drive? Pre-result drive, word itself says result के पहले की drive. It's called a pre-result drive. Simple.
right? Now, again, the problem here is since we at CMONK is trying to have all the best thing possible for you. Day before yesterday, how many of you are aware that we had a session for KPMG where the director of transfer pricing came in and he explained entire transfer pricing in a very nice way? Did you guys attended it? If you have attended it, bang on. If you have not attended it, whose mistake is this? It's my mistake, right? शिवम सर मार्केटिंग नहीं कर रहे अच्छे से। शिवम सर को और मार्केटिंग करनी चाहिए। उनको पेड एडवर्टीजमेंट चलानी चाहिए ताकि हमें पता पड़े कि वैकेंसी आ रही है ना? राइट? नाउ अगेन आई एम सेइंग यू गाइस, अपॉर्चुनिटी विल कम, it will come again, but it will come with the cost of paisa and regret. So what is important, right? It's also applicable for my past students. Right? For the past students, those who have done the GIR, bang on. GIR करने से आपको एक पाथवे मिला है, उसको यूज करें और अच्छे से जॉब ढूंढे। First thing. For the students, those who have not done it, what is a small request from my side? Don't, don't, please understand this and take it very seriously. Don't bypass it or don't forgo it or don't delay your interview prep. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे थ्रू ही करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ GIR ज्वाइन करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आउट इज गाइस, लाइफ में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, और स्पेशली जब पैसे की बात हो तो छोड़ने का नहीं। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज अ लर्निंग एंड लेसन व्हाट आई वांटेड टू पास ऑन टुडे। कैंपस आएगा जाएगा, ऑफ कैंपस आएगा जाएगा, बट अगर आपको पता नहीं है, आपके पास दोस्त नहीं है, इफ यू डोंट हैव द पीयर ग्रुप एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, whose mistake is this? चैट पे बताइए, whose mistake is this? whose mistake is this guys? right? चैट पे बताइए, whose mistake is this? right? It's our mistake, right? It's our mistake. So I'm not blaming anyone, I'm not saying anything to you, but what I'm trying to say is that please take your career very seriously. कितने दिन हो गए एग्जाम खत्म हुए? इट हैज बिन ऑलमोस्ट अ मंथ, एक महीना होने आ गया, राइट? यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी एंड द बी स्कूल गाइस? द बी स्कूल गाइस, दे एंटर द बी स्कूल, दे सेज दैट मेरे रिज्यूम में क्या नहीं है मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा इस बी स्कूल में आके, जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा आई डू दैट। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं। हैव यू एवर थॉट कि कैन आई इनकॉर्पोरेट 10 डिफरेंट स्किल सेट्स इन माय फ्री टाइम? इफ यस, वेरी गुड, इफ नो, डू इट। ठीक है, दैट इज देयर। यस। Now, why do I feel so much for you guys? Because I have went through this journey. I know the importance of this. मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे दोस्त को आईटीसी से पैकेज मिला था 21 लाख का। ठीक है, लिटरली आईटीसी तब 21 लाख देता था 2019 में जब मैं सीए बना था, राइट? ही शोड मी द ऑफर लेटर ऑफ 21 लाख। मैं भी 2021 में, मैं 2019 में सीए बना था, मेरे को उसके उल्टे अमाउंट का ऑफर लेटर मिला था। मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे जब मैंने देखा कि मेरे दोस्त को 21 का क्यों मिला और मुझे 12 का क्यों मिला। राइट? वी विल कंपेयर इट, वर्ल्ड विल कंपेयर इट। मेरे को पता नहीं था कि सर वैकेंसी है, मुझे पता होता तो मैं तो कुछ भी कर डालता वहां जाने के लिए, राइट? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू प्लीज 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 गेट इनटू दिस पूल, अवेयर ऑफ दिस एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट? नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट अपडेट एंड लास्ट थिंग, राइट? फॉर द पीपल दोज आर सीरियस, ठीक है, जो इंसान सीरियस है एंड genuinely wanted to build their career, right? A small and last update for you. The next batch is starting from 18th. 18 दिसंबर से चालू हो रहा है, right? It's for 12 days. Right? Batch does not end in the 12 days, of course, because we'll trouble you out till the time you get placed. Everything needed for getting into good companies is covered here, right? One more important thing, कुछ लोग बोलेंगे कि सर रिजल्ट के पहले क्यों करें? The reason is time. Second thing, right? Sir, what if I fail? Don't worry, come to the next batch free of cost. Next batch as in जब मई का होगा तब, ठीक है? तो तब आ जाना, कोई पैसा नहीं मांगेंगे। Now, what is the best thing doing now? You'll be prepared till the time results are out. And this might be the last batches before the results. ठीक है? And next best thing is timings. मॉर्निंग में भी बैच है, इवनिंग में भी बैच है, ठीक है? तो टाइमिंग का भी इशू सॉर्टेड। अब कुछ लोग यहाँ पे बहाना देंगे, सर आई हैव माई ऑफिस। 3 साल से ऑफिस में जो करना था कर लिया,
अब अपने करियर के लिए कुछ कर लो। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, राइट, द प्राइस इज केप्ट वेरी नॉमिनल, राइट, आफ्टर दिस बैच, 51th बैच से, बिकॉज हाफ सेंचुरी होने के बाद, है ना, प्राइस तो बढ़ना बनता है। तो हाफ सेंचुरी जब हो जाएगी हमारी, तो विल इंक्रीज द प्राइस एज वेल। ठीक है, बिकॉज पोस्ट रिजल्ट प्राइसिंग भी बढ़ जाएगा। दैट इज देयर। नेक्स्ट, you'll also find out the best mentors of the industry which you can think of, राइट, जो मेंटर्स आप देख सकते हो, जिनसे आप बात करना चाहते हो, सभी मेंटर्स आएंगे। एंड यू लव टू इंटरेक्ट विद ऑल दोस पीपल आउट दोस आर देयर, राइट। इफ यू वांट टू टेक अ ओपन फीडबैक ले लो लिंक्डइन पे किसी से भी, राइट। You'll always get a good and positive feedback about this workshops, right? So these are the mentors for for the next batch, which is there. Don't think much. You can register for the next batch. The link will be shared in the group as well. The link will be shared in the chat as well. Okay. Yes. Will the batch in English? Yes, the batch is gonna be in English. That is there. अब now we'll open the forum for the doubts. जिसको कोई भी doubts हो, right? You can put those doubts in the chat box. We'll be happy to address it. You know, we'll be happy to address any of the doubts you guys are having it. कुछ भी doubts हो relating to career, relating to the campus, relating to the workshop, we'll be happy to cover it. Okay. Few students are asking कहाँ से register करें. Very simple. Go to camonk.com. The time you go to camonk.com, यहाँ पे आपको टॉप पे ही मिल जाएगा गेटिंग इंटीग्रिटी वर्कशॉप. क्लिक हियर. वंस यू क्लिक हियर यू विल गेट इट. ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट. प्राइसिंग इज 4299 व्हिच इज देयर. ओके. हाँ, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर टेंशन आ गया मेरे को ये देख के. अच्छी बात है, टेंशन आया तभी तो करियर के लिए काम करोगे. लाइफ में जब तक चिल बैठे थे तब तक कुछ नहीं होता है. सीए फाइनल के एग्जाम का टेंशन आया था तभी तो पढ़ाई किए थे, तभी तो पास होंगे. क्लियर है ना? यस. अगर ये सोच के बैठते कि सीए फाइनल इजी है तो कभी सीए फाइनल की पढ़ाई करती क्या? नहीं. राइट. दैट इज देयर. ओके. अच्छा, one more important update, right? We do conduct a lot of events for you guys. Where a lot of pre-placement talks, a lot of sessions are there, which you should not miss. मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता. कल पीडब्ल्यूसी का इनडायरेक्ट टैक्स का टेक्निकल डिस्कशन है. इफ यू आर इंटरेस्टेड, join it. Even if you're not interested, then also join it. You'll get to see what is happening in the market, right? एक केपीएमजी का था, वो मिस हो गया. एक प्री रिजल्ट ड्राइव भी हुआ था. I don't know how many of you are aware of it, which was for investment banking firm, right? If you're aware of it, bang on. If you're not aware of it, so sorry. ठीक है. मेरे साइड से हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाया करो. ठीक है. Now let's come to the doubts which are there. You can put the doubts in the chat box. We'll be happy to address it. सर थर्ड अटेम्प्ट है बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, तो कैंपस में हो जाएगा क्या? देखो, नो वन कैन से गारंटी कि कैंपस में होगा या नहीं, बट हाँ, एज मिलता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का. दैट इज व्हाट आई कैन से. सर इफ मिस अगस्त 23 कैंपस कैन बी अप्लाई फॉर 24? यस. हाँ, कल अमृतसर मीटअप है, परसों लुधियाना में है, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में है, फिर उसके बाद अहमदाबाद में है. तो 4 सिटीज में मीटअप है. जिसको पर्सनली बात करना है आ जाइए, सपरिवार अपने बीवी बच्चों दोस्त भाई बहनों को सबको लेके आइए. राइट. अब कोई कह रहा है मेरे बीवी बच्चे नहीं है, तो कोई बात नहीं, अकेले आइए. राइट. डिटेल्स कहाँ मिलेगी? मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, फॉलो कीजिए, विल गेट द डिटेल्स. ओके. सर प्लीज पोस्ट द वैकेंसीज पीडीएफ विच इज देयर. देखो यार, इतनी वैकेंसीज आती हैं, यू जस्ट नीड टू ट्रैक इट. आई कैन पुट इट आउट इन द ग्रुप विच इज देयर, बट वो फिर बहुत ज्यादा स्पैम होना चालू हो जाता है. बट जितनी मुझे मिलेगी आई ट्राई टू पुट इट आउट. Let's take the queries which are there on the YouTube live first, right? Then we'll move to Zoom chat as well. Qualified in May 23, looking for joining it. Can I join it? Yes, Akshay, you can join it, not a problem. मल्टीपल अटेम्प्ट वालों को के बारे में कैंपस में है. देखो, एक चीज बताओ. देखो, अटेम्प्ट पैरामीटर इज समथिंग व्हिच यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ. व्हाट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू डू गाइस? अगर आपके दिमाग में अटेम्प्ट का पैरामीटर है, पहले तो वो निकालो. खुद को अपने आप पे भरोसा नहीं है तो सामने वाले को क्यों भरोसा रहेगा तेरे पे? ठीक है. तो फर्स्ट रिमूव दैट बैरियर. सेकेंड थिंग, इफ यू हैव अटेम्प्ट, एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, दिमाग में डाल दे. कंपनीज विल, few companies will shortlist based on attempt facts. Accept it. I cannot sugarcoat it.
फ्यू कंपनीज विल फिल्टर बेस्ड ऑन अटेम्प्ट के ऊपर सबसे ऊपर आते हैं एक चीज विच इज कॉल्ड एज रेफरेंस। रेफरेंस है, कोई अटेम्प्ट पूछेगा भी नहीं। रेफरेंस कैसे ढूंढना है बताऊंगा जी यार में, टेंशन मत ले। राइट। सर मल्टीपल अटेम्प्ट लगे हैं, अटेम्प्ट वाला बात हो गया। व्हेन विल द नेक्स्ट जीआर बैच आफ्टर दिस? ये बैच खत्म हो रहा है 28th को, फिर आएगा आपका रिजल्ट which is I'm expecting somewhere around this. We might launch one fast track batch. We have not decided yet, but we might launch it depending on this batch completion. But ज्वाइन करना है तो अभी कर लो। ठीक है। Let's take that out. So you have said you don't know about ITC vacancy, but हमें वैकेंसी कैसे पता चलती है? शिवानी, वेरी गुड क्वेश्चन। वैकेंसी पता पड़ती है तीन चीजों से। फर्स्ट, नेटवर्क। सेकंड, having a good peer group around. And third, connected with good mentors and the people around. ठीक है, दैट इज देयर। सर अगर आर्टिकल्स, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिंक्डइन ढंग से चलाना आता हो तो पता पड़ जाता है। राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। माय एडवांस एंटिटी हैज नॉट ओवर, कैन आई अटेंड द इंटरव्यू? यस, यू कैन अटेंड इट। सर वेयर डू वी गेट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्री रिजल्ट ड्राइव? सी अमॉन्ग चैनल कनेक्ट करके रख लो। इज रेफरेंस अवेलेबल फ्रॉम योर साइड? मैं जनरली पर्सनली किसी को रेफरेंस नहीं देना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज इफ समवन बैकड आउट आफ्टर यू आर गिविंग अ रेफरेंस, वो बहुत बुरा बेइज्जती होता है। राइट। तो दैट इज देयर। मैं पर्सनली नहीं देता हूँ, बट हाँ हमारे ड्राइव्स होते हैं विच इज कॉल्ड एज अ संभव। इट्स संभव प्रोग्राम। GR 10 to 10:45 not feasible. Can I attend evening session? Yes, you can do it. Does off-campus companies go side by side along with on-campus? No. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। What is off-campus? मेरा मन हुआ आज मैंने हायरिंग चालू कर दिया, दैट इज off-campus। ठीक है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। Sir, what skills to be added meanwhile? Very good question. Which skills I can add up to the area where देखो सिंपल है। डिसाइड द एरिया एंड डोमेन वेयर यू वांट टू गेट इनटू। अगर आईबी में जाना है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग से। राइट। स्टार्ट ऑडिट में जाना है तो ऑडिटिंग कैसे करते हैं ढंग से वो सीख। डिसाइड द डोमेन, डिसाइड द स्किल मैप टू इट। जैसे इंटरनल ऑडिट सीखना है तो कैन आल्सो लर्न एसएपी। ऑडिट सीखना है तो कैन आल्सो लर्न सम ऑटोमेशन टूल्स नाउअडेज, जैसे एंट्रिक्स, डेटा स्टूडियो, ये सब सीखो। या तो फिर मास्टर क्लासेस देख सकते हैं। और what about pre-result drive of EY? It's there. Search on LinkedIn. You'll get it. Sir, who did not clear in second attempt can also apply for campus? Everyone can apply for campus. How to mention attempts for unknown attempts? Very good question. We'll have a separate discussion. How to count number of attempts. So what if my articleship is getting completed on 12th of February? How can I apply for a results? There is something which is called as conditional offer, right? जिनके लिए articleship complete नहीं हुई है, you guys ask an HR to issue a conditional offer. Uh, from where do we get information about pre-result drive? I just covered it out. Articleship get overs in April. Will I be eligible for campus? Yes. ICAI cut-off date देगा, उसका टेंशन ना लो. Right, which is there. Okay, let me also take 2-3 important questions which are there. Sir, will GR be face-to-face batch or virtual batch? My friend, it's going to be virtual batch. Right, face-to-face नहीं है अभी। ठीक है। अल्ट्रिक्स कोर्स नहीं मिल रहा है। हाँ, अल्ट्रिक कोर्स नहीं मिल रहा, मेरे वेबसाइट पे जाके देख लो, मिल जाएगा। सर इफ नॉट possible for me to attend a live, will I get any recorded? You'll get a recording of all the lectures which are there. Okay. Where to find the references? LinkedIn Baba ki jai. LinkedIn Baba ki jai. Use LinkedIn. Can we find a good references to convince the companies to shortlist me in a campus? नहीं, ऐसा जनरली होता नहीं है, बट हाँ अगर good references तो anything can be done. If selected in a pre-result drive but not able to clear the CA, then what will happen? Condition will lapse. That is something which is called as a conditional offer. Ritika ji. Uh, Shweta कह रही I want GR 48 back. क्या क्या बोलूं मैं? So today I enrolled for Start Audit Masterclass. How do I add a value in a resume? हिमांशु जी, Start Audit Masterclass के एंड में मैंने बताया कि कैसे उसको आप रेज्यूमे में डाल सकते हो, तो देख लेना। ठीक है। Got it, got it, got it, got it, got it. ठीक है। So I think I've covered most of the queries which are there. If you guys have any query, we'll be happy to cover it in the comment section. YouTube comment section भर दो, पूरा भर डालो, बेशरम होके पूछो, बेशरम होके। Right, we'll be happy to help you out with the things or the queries which you guys are carrying. Right, and I would seriously request all of you, right, including my previous batch students. I could see a lot of 48 batch students are sitting here. Guys, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। पहला, करियर को सीरियसली लो।
बैच खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वेलापंथी चालू कर दोगे। मैं देख रहा हूँ कुछ बनते लोग अलग स्टेटस डाल रहे हैं। जीआर खत्म होने तक तो बढ़िया से क्लास में बैठे रहते थे दुबुक के। आफ्टर द बैच इज डन यू गाइस हैव स्टार्टेड रोमिंग अराउंड, है ना? कोई पहाड़ों के बीच में बैठ के एकदम स्टेटस डाला है, मैं देखा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं आज, विल हैव अ सेशन, सिमुलेशन कंप्लीट करके आओ, विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, ऑफ कैंपस भी डिस्कस कर लो। आई थिंक देयर इज नथिंग टू डिस्कस अबाउट ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस इज लाइक कैंपस के अलावा जो भी कंपनी दिख रही है, आइदर ऑन लिंक्डइन, आइदर थ्रू सम एजेंसीज और थ्रू सम प्रोग्राम, दैट इज ऑफ कैंपस। ठीक है, ऑफ कैंपस में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आई एम कंफ्यूज बिटवीन जॉब एंड प्रैक्टिस, विल कवर इट माय फ्रेंड, डोंट वरी। ठीक है, यस, तो विल सी यू टुमारो। आईडीटी का सेशन यूट्यूब पे नहीं रहेगा कल, राइट? ये सब प्राइवेट सेशन है, अलाउड नहीं है ये सब डालना यूट्यूब पे। ठीक है, so that's it from my side, guys. We have one more meeting scheduled at 9, so I just need to end up the Zoom. Right. For the people, those who have any more queries related to anything, right, put it in the YouTube comment section. We'll be happy to address it. And please do share this videos with your friends so that they are also aware about it. They should also start preparing for the interviews. And please, guys, the last request, and that is start taking your career seriously. Because आप नहीं, मतलब तू नहीं तो कौन, राइट? और अभी नहीं तो कब, दो सवाल पूछो। If not you, then who? If not now, then when? Clear? Because the time results are going to be out. 13,000 सीए पास होते हैं हर अटेम्प्ट में। 13,000 सीए पास होते हैं। आपको उन लोगों से जीतना है, सो दैट यू आर एट एज। सिंपल सा एक सवाल पूछो, क्या अगर मैं प्रिपरेशन पहले करूंगा तो मुझे एज मिलेगी? हाँ, राइट, तो दैट इज देयर। So that's it from my side, right? इसके अलावा we'll have a lot of sessions for ICAI campus in upcoming days so that you are prepared well. Thank you guys. Bye bye. All the best.